हेलो एवरीवन वेलकम टू ICare Classes आमे प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करथिले 2019 फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट रो किछटा क्वेश्चन आज आमे डिस्कस और एक्सप्लेन करबा कोन 2021 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन OTET रो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो क्वेश्चन कोन सब आस्तिला विथ एक्सप्लेनेशन चलो देखिबा क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिमेरिट ऑफ ग्रुप लर्निंग एठी पचारची को कथा ना ग्रुप लर्निंग कथा पचार आमे प्रथमे टिके बुझिबा व्हाट इज ग्रुप लर्निंग ग्रुप लर्निंग कोन ग्रुप लर्निंग होची कोलैबोरेटिव लर्निंग कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप लर्निंग रे कोन ना शिक्षार्थी माने सुजोग पांती निजर सांग साथी मानक सहित दलगत भाव रे कोन ना लर्न करबा पई जेते बेले शिक्षकन ठारू नॉर्मल क्लासरूम रे गोटे जिंस सुनंती आ सांग साथी मानक मध्य रे बसी के हमें जो दलगत भाव रे डिस्कशन करंती बा निजर आइडिया को थ्रो इंटरैक्शन हमें शेयर करंती सेते बेले कोन हमर आइडिया गुडा को मल्टीपल भाव रे कोन ना डेवलप हेई थाए मल्टीपली हमें गोटे प्रॉब्लम को कोन मल्टीपल वे रे सॉल्व करंती थ्रो मल्टीपल आइडियाज ग्रुप लर्निंग रे कोन ना एडवांटेज कोन हेता ग्रुप लर्निंग करबा द्वारा कोन फर्स्ट हमर इंटरेस्ट डेवलप हे थाए एमंग स्टूडेंट मानक भितर कोन ना इंटरेस्ट डेवलप हुए ना सी जदी कहि पारुची मु कोन पय न कहि परबी आ जदी सी कहि पारुची मु कोन पय चेष्टा न करबी क्यूरियोसिटी डेवलप हे थाए क्यूरियोसिटी डेवलप हे थाए आउ कोन हे थाए ना ग्रुप लर्निंग हेल्प करे स्लो लर्नर मानंकु केउ मानंकु स्लो लर्नर मानंकु किपरि भाबे स्लो लर्नर मानंकु ग्रुप लर्निंग हेल्प करिवो ना जेते बेले स्लो लर्नर गोटे क्लासरूम रे रहूची टीचर जेते बेले तारो क्लासरूम रे धरे फॉर एग्जांपल 30 पिला अछंती टीचर कोन कला ना ग्रुप कर दला 6 जण लेखा स्टूडेंट को नहीं कि से गोटे गोटे ग्रुप कर देला जेते बेले से स्लो लर्नर मध्य गोटे ग्रुप रे थिबो सी कोन करिवो ना तार जो 5 जण आउ 5 जण जो संग साथी तारा रहिले से ग्रुप रे सी जो तांकर आइडिया को शेयर करिवे बा गोटे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिया पे आइडियाज काढिबे से स्लो लर्नर टा कोन तांको द्वारा कोन किछटा इन्फ्लुएंस हेई परिबो सिखि परिबो जे ना मु मध्य चेष्टा कले मोर मध्य हबो डेवलप हबो स्लो लर्नर माने अधिकांश क्लासरूम रे चुप रहि जांती जेहेतु से माने एंजाइटी बा फियर को निज भीतर पूरी दिन जदी मु किछि कहिबी कि भूल कहिली कि ठीक कहिली मते सब मजाक उड़ेबे जेते बेले से ग्रुप रे किछि जिंस तांका ग्रुप रे भलो कले से स्लो लर्नर टा कोन गले ना त सांग साथी मानन ठारू प्रेरणा पाई कि सी मध्य कहला ना मु मध्य पार्टिसिपेट करि परिबी थ्रू पार्टिसिपेशन कोन ना टीचिंग लर्निंग टा इफेक्टिव हे परिबो टीचिंग लर्निंग टा कोन हे परिबो ना इफेक्टिव हे परिबो ग्रुप लर्निंग रो बहुत सारा एडवांटेज अछि जेमति कि डेवलप होबो कोन ना इंटरैक्शन स्टूडेंट माननक मध्य रे कोन ना इंटरैक्शन डेवलप होबो पीयर लर्निंग डेवलप होबो टीचिंग टा मोर एक्टिव हे परिबो जादरे कि सब स्टूडेंट कोन इन्वॉल्व हेबे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे तो एठी हमर कोन देजे क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन बचारची कोन ना ग्रुप लर्निंग रो कोनोसी निम्नक्त मध्यरु को ऑप्शन टा हमको लागुच नै डिमेरिट नुह काहर ग्रुप लर्निंग रो डिमेरिट नुह बीइंग इन्फ्लुएंस बाय सर्टेन इंडिविजुअल एटा काहा को रेफर करचे स्टेटमेंट जेते बेले गोटे स्लो लर्नर गोटे ग्रुप रे रहूची सी कोन ना इन्फ्लुएंस होची काहा द्वारा ना तार पियर मानंक द्वारा
एटा पॉजिटिवली भी हमें नहीं परिबा ए सेंटेंस को कोन हमें पॉजिटिवली भी नहीं परिबा तो पॉजिटिवली भी नहीं परिबा कि नेगेटिव होची ना कोन जेते बेले गोटे ग्रुप रे 5 जण रहउचंती तो डोमिनेटिंग नेचर टिके रहे से ग्रुप रे कोन डोमिनेंस रहे जब 3 जण भलो कहउचंती 2 जण भलो कहउचंती आउ 4 जण कोन मौका ही पाइबेनी से आ किछि कहिबा पई जो 2 जण भलो कहंती से माने भलो ही कहि चलिबे आ जण चुप रहिला तो चुप ही रहइबो सेति पई कोन हैला ना एटा बहुत पॉजिटिव रे जदि हम स्लो लर्नर मानक पई नै परिबा ताले भलो जेहेतु एटा गोटे जनरल स्टेटमेंट देछि स्लो लर्नर कथा ही कहनी से एठी हम कोन देखिबा ताकू नेगेटिवली बा डिमेरिट गोटे ग्रुप लर्निंग रा बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन इंडिविजुअल नेक्स्ट कोन देखिले ताले एटा डिमेरिट हला स्लो सम स्टूडेंट्स एग्जिबिट देयर डोमिनेंस मु जेमति कहली गोटे ग्रुप रे जति 6 जण पिला रहउचंती तो गोटे प्रॉब्लम जदि दिया गला 6 जण जाक समान भाव रे एक्टिवली एंगेज हे सॉल्व कर देबे कि समस्त आंसर दे देबे बोली ता माने नाही कोन हबो ना सेठी डोमिनेंस ता रहिबो ना किछिटा पिलांकर डोमिनेंस ता रहिबो तो एठी कोन हला ना समस्त भी इन्वॉल्व हेई पारिलेनी तो एटा कोन गोटे डिमेरिट रे गला नॉट कंप्लीटिंग ए टास्क इन एप्रोप्रिएट मैनर गोटे निर्दिष्ट समय सीमा जदि हमें दबा जे एई प्रॉब्लम टाको तमे एतिक समय मध्य समाधान करिवो जदि से ग्रुप रे तांकर इन्वॉल्वमेंट पिलांक सहित कोन 6 जनकर निज निज भितर परस्पर भितर इंटरैक्शन अछि ताहाले से प्रॉब्लम टा जल्दी सॉल्व हे जो जदि नथिबो जदि जेलसी एग्रेशन बा डोमिनेंस बेसी आसिला तो पिला कोन ना से प्रॉब्लम को सॉल्व ठीक टाइम रे कर परिबे नाही सेठी कोन हे जीवन एटा गोटे डिमेरिट ही गला देन कम पचला ना मेनी स्टूडेंट डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज एनफ टाइम इन एन एक्टिविटी आमे जेते बेले गोटे ग्रुप रे 6 जण पिल्लां को रखुचंती बा 5 जण पिल्लां को रखुचंती सेते बेले कोन होउची ना गोटे आमे जेते गोटे टाइम फिक्स करके पिल्ला मन को देई दबा कि मते एई प्रोडक्ट ता दरकार एई प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन दरकार एतिक टाइम भितरे तो 6 जण मानक मध्यरु जो 6 जण जदि गोटे गोटे करके 6टा सॉल्यूशन देबे ताले से माने कोन निज रिसोर्स को बा आईडिया को शेयर करले किंतु प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन पाई हम 6 जण जानकर तो आईडिया को नहीं परिबन न आमे किछि जनकर कोन किछि जनकर अपॉर्चुनिटी बा किछि जनकर जो अपॉर्चुनिटी थिला शेयर करिवार आईडिया ताको कोन आमे किछिटा से किछिटा बाधा प्राप्त हो जिवो तो सेठी कोन होबो केवल इंपोर्टेंट जोटा सॉल्यूशन मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जिवो सेठी ग्रहण करिवे तो कहला ना मेनी स्टूडेंट डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज एनफ टाइम इन एन एक्टिविटी गोटे पर्टिकुलर ग्रुप रे जदी 5 जण रहउचंती 6 जण जाक सेही टाइम भितरे से यूटिलाइज करके निजर लर्निंग को नॉलेज को प्रॉब्लम टा सॉल्व कर दे बोली ता माने नाही एथिरु ताले कोन जाना पड़ला एटा गोटे कोन हे जिवो ना तार वीकनेस हे जिवो किंतु डिमेरिट नुह तो एटा डिमेरिट नुह डिमेरिट रे जीवनी कने ग्रुप लर्निंग रे सेटा टिके रुहे जे सब टाइम ले हे पारे नाही समस्त सेही पर्टिकुलर टाइम रे निज रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन काढी पारंती नाही सेठी एठी कोन हे जिवो ना एटा गोटे वीकनेस हे पारिबो ग्रुप लर्निंग रा किंतु डिमेरिट नुह तो ये करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट करेक्ट तो नुह एप्रोप्रिएट को ऑप्शन डी नंबर हमर ऑप्शन टा नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर कांसेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म तो एठी गोटे नुआ टर्म कोन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आमे पढितले कंस्ट्रक्टिविज्म कोन ना create something new through utilize their own learning student माने जेते बेले कोन ना निजर existing knowledge को utilize करके किछि न्यू बा नोवेल जिंसो क्रिएट करले सेते बेले कोन हे गेला ना कंस्ट्रक्टिविज्म एठे गोटे टर्म ऐड कर देला कोन ना सोशल माने कोन सोशल माने सामाजिक बस
जदि आमे लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा सोशल मीन्स जे समस्त सहित मिसी जाउथबो जे समस्त सहित सोशिएबल बा मिसी जाउथबो ने कोन देखिले पचले ना नॉट मेजर कांसेप्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रे हमर कोन हुए ना पिला माने कंस्ट्रक्ट करंती थ्रू सोशियली इंटरैक्शन करके सोशियली इंटरैक्शन करके जेते चिल्ड्रेन बा स्टूडेंट किछि क्रिएट करूछि क्रिएट न्यू थिंग्स सेतेबेले कोन हे जिवो ना हमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हे जिवो तो बेसिकली कोन कांसेप्ट कोन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रिफर्स टू क्रिएट समथिंग न्यू थ्रू सोशल इंटरैक्शन सोशल जेतेबेले हमें परस्पर सहित कोन जेतेबेले भाबर आदान प्रदान हो इमोशन हो फीलिंग हो आई शेयर करबा कथा हे जे हमर आइडियाज जेतेबेले से गुडा को करिके हमें कोन करचंदी किछि नुवा जिंस क्रिएट करचंदी सेटा कोन हे जे हमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म सहित मोस्टली एसोसिएटेड किए ना भाइगोट्स्की के ना साइकोलॉजिस्ट से कोन देथिले ना सोशियो कल्चरल थ्योरी जोटा कि काहा ऊपर बेस करके देथिले ना सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर बेस करके देथिले सी कहउतले कोन ना मेजर फैक्टर कोन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रा मेजर फैक्टर कोन कोन देथिले प्रथमे देथिले कोन ना सोशल इंटरैक्शन नेक्स्ट देले कोन एमकेओ मोर नॉलेजेबल पर्सन जो स्कैफोल्डिंग कथा में पढ़थिले सेठा कोन हे जीवन ना मोर नॉलेजेबल पर्सन गोटे पियर बा शिक्षार्थी जेते बेले गोटे अधिक जानिथिबा लोकंगटू किछि जानि कि निजर ओन नॉलेज को ऐड करिकि किछि जिंस गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कला किछि जिंस क्रिएट कला सेटा कोन हे जीवो ना थ्रू एमकेओ तार डेवलपमेंट हैला थर्ड जिंस से कहिथिले कोन ना जेपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निजर ओन कौन हे गला नॉलेज जेएडी जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट पिलार निजर नॉलेज आ जेते बेला से कौन कला ना एमकेओ रो सहाय्य बा हेल्प नै कि तार गोल को अचीव कला सेट ए जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट टू मोर नॉलेजेबल अदर जोड़ा कहले हम तांको हेल्प नै कि जेते बेला कोन से जिंस को अचीव कले जो गैप टा मझिरे रहला सेटा कोन हे गला जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और एमकेओ मझिरे जो रिलेशन टा रहला सेटा कोन हे गला हमर जेपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो से तीनटा मेजर फैक्टर कहितले कोन ना सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऊपर कोन सोशल इंटरैक्शन एमकेओ जेपीडी देखिबा से नॉट मेजर पचरची तो मेजर फैक्टर बा कांसेप्ट सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रियलिटी नहीं नॉलेज नहीं लर्निंग तो कौन है जो एठी करेक्ट ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज नेक्स्ट देखिबा हमें कोन क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल हम प्रीवियस सेशन रे भी देखिथिले कोन ना व्हाट इज इंक्लूसिव स्कूल इंक्लूसिव स्कूल कौन देखते इंक्लूसिव स्कूल रिफर्स टू इंक्लूडिंग all child with equal access स्थान समान स्थान equal opportunity next कौन
equal education etc in a same school in a same classroom कौन है इनक्लूसिव एजुकेशन रो फैक्टर गुड़ा देखले ना बेसिकली कहा ऊपर बेस करची इक्वल एक्सेस इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल एजुकेशन इन अ सेम स्कूल इन अ सेम क्लासरूम विथ द नॉर्मल चाइल्ड तो देखिए कौन पचारची which of the following is the characteristics of inclusive school हम सब देखी देले तो अरेंजमेंट ऑफ सेपरेट क्लासरूम सेपरेट कथा से कही नाही इंक्लूसिव माने से इंक्लूड कला इन सेम स्कूल देन स्टूडेंट आर इम्पार्टेड एज पर देयर कैपेबिलिटी शिक्षार्थी माने निजर दक्षता अनुसार तांको शिक्षा दियो जीवन ना केबे एटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुह इंक्लूसिव रो से समानता ऊपर बिलीव कला देन वीकनेस ऑफ स्टूडेंट इज गिवन स्पेशल अटेंशन ना से सेम अटेंशन कथा कहिची parents are integral part of learning process एटा ठीक हबो काहे ना inclusive स्कूल रे जेतिकी गोटे टीचर ऑर्गेनाइजेशन बा स्कूल रो दायित्व रहउची सेतिकी तांको पेरेंट्स मानकर भी रहउची जे से केमिति प्रचेष्टा करिवे पिल्लांको स्कूल पठेइबे आ एगुडे को सब तांको राइट तांको दिया जिबा दरकार डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन माननको तांको राइट प्रोवाइड करिया पई किए देइथिला परामर्श इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव स्कूल जो थरे कि पेरेंट्स मानकर रोल मध्ये गुरुत्वपूर्ण नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 हु हैज रिटेन द बुक थियोरी ऑफ मोटिवेशन व्हिच ही हैज गिवन 24 थियोरीज ऑफ मोटिवेशन थियोरी ऑफ मोटिवेशन लिखितले किए ना केबी मार्सेन सी कौन देथिले ना मोटिवेशन ऊपर थियोरी लिखिथिले केतेटा थियोरी 24 थियोरी के देथिले केबी मार्सन सेठी अछि ऑप्शन नंबर ए रे केबी मार्सन नेक्स्ट देखिबा एटा फैक्चुअल क्वेश्चन टा नेक्स्ट देखिबा learning is a change in behavior due to punishment and reinforcement जत्ते बळे आसीबो reinforcement कथा कहा कथा ना punishment और reinforcement कथा आसिले माने आखि बंद करी कहा कहबा स्किनर कोन देथिले ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा ऊपर देथिले से ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली स्टिमुलस रेस्पॉन्स और रेनफोर्समेंट ऊपर साधारणतः फोकस कला कहा पर तो आखि बंद करी जोडी पनिशमेंट रिवार्ड रेनफोर्समेंट कथा आस्थिबो स्किनर हमें लिखि देबा नेक्स्ट देखिबा व्हाट वाज द रिकमेंडेशन मेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 in relation to integrated education कौन कहि माने तार कोन कांसेप्ट आगे बुझ दो integrated education refers to integrate without disability student and having disability issues student मानु कोन ना integrate करिबा link करिबा in a common learning environment रे integrated education कहला तो national policy एजुकेशन पॉलिसी 1986 कौन कहितला इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऊपर ना स्टूडेंट हु नीड डिफरेंट लर्निंग टेक्निक एंड रिक्वायरमेंट विल लर्न टुगेदर रेगुलर क्लास टीचर्स विल टेक responsibility for their teaching less and moderately differently able student will receive education in a regular normal school special school for differently able student तो NEP 1986 इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऊपर कौन कहला जो मानकर जो माने मॉडरेटली एबल स्टूडेंट से माने रिसीव करि परिबे एजुकेशन रेगुलर और नॉर्मल रे जो माने एक्सेस बा हाई लेवल रे अछंती डिफरेंटली एबल स्टूडेंट तो से माने
नॉर्मल स्टूडेंट मानक सहित समान भाव में शिक्षा को ग्रहण करें ना जो रेट रे नॉर्मल शिक्षार्थी माने ग्रहण करेंगे। तो ये कौन कहले ना लेस ऑफ मॉडरेट डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन मानक आम कौन करवा ना रेगुलर बा नॉर्मल स्कूल रे शिक्षा दबा। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 at what age in a child does emotion like curiosity shyness 2 वर्षर छुआरे कोन क्यूरियोसिटी और शाइनेस डेवलप हबो कि ना 12 वर्ष रे से चालाक हे जबो 18 वर्ष रे तो से जम्मा भी शाय कि क्यूरियोसिटी रहि पारे शाइनेस तारे टिके कमी जाय। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट एठी कोन हबो ना 5 इयर्स 5 वर्षर छुआ को हमें डाकिले से संग संग आसीबो नाही ता मामा पाखरु कि सांगे सांगे हम जो 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 जिनसडा हम करियो कहिबा कि कराइबा को चेष्टा करिबा से करिवो नाही ता मन रे कोन रहबो ना टिके साइनेस रहबो क्यूरियोसिटी रहबो से बारंबार पचारथुवा एटा कोन एटा काई कि हुए एटा केमिति हुए ता मन रे कोन क्यूरियोसिटी थाए। 18 वर्षर छुआ कोन थरे मना कर दिले से माने रहि जबे किंतु 5 वर्षर छुआ बारंबार गोटे क्वेश्चन जानिबा पई तारा मन रे कोन ना से आकांक्षाटा रहितो जे एटा कोन मु जानिबी। नेक्स्ट देखियो कोन एठी हला 5 वर्षर छुआंग मधरे हम क्यूरियोसिटी और साइनेस देखियो पाइबा। नेक्स्ट देखिबा इफ a learner not interested in mathematics is forced to study the subject then the learning is not fruitful. This is explained by which law of Thorndike? आमे कोन देखिबा थॉर्नडाइक। तो बेसिकली हम ये कांसेप्ट बुझ देले हम क्वेश्चन करियो हमको इजी हबो ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା थॉर्नडाइक ଦେଇଥିଲେ କାହା ଉପରେ थॉर्नडाइक ଦେଇଥିଲେ ଆମର ट्रायल एंड एरर थ्योरी देथिले सेथरे से मेन बेसिकली फोकस करथिले काहा ऊपर ना ट्रायल और एरर ऊपर। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट मध्ये कुहा जाय तांगर एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक जो एक्सपेरिमेंट करथिले एडवर्ड ली थॉर्नडाइक तांको एक्सपेरिमेंट को कोन कुहा जाय ना पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। से गोटे हंग्री कैट ऊपर कोन करथिले ना तांगर एक्सपेरिमेंट को करथिले। तो सी क्षेत्र कोन तांको से थ्योरी रे ट्रायल एंड एरर थ्योरी रे कोन करथिले एक्सपेरिमेंट रे से कोन करथिले ना हमर लॉ देथिले केतरा लॉस ऑफ थॉर्नडाइक दी प्रकार देथिले कोन देथिले दी प्रकार देथिले गोटे प्राइमरी लॉ आ गोटे कोन सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ रे कौन थिला हमरा लॉ ऑफ रेडीनेस इच्छा शक्ति जोटा कौन कहते अदरवाइज हम कहबा मोटिवेशन। नेक्स्ट लॉ कौन देथिले लॉ ऑफ एक्सरसाइज बा हम तो कौन कहले प्रैक्टिस लॉ ऑफ प्रैक्टिस। थर्ड रे से कौन देले ना लॉ ऑफ इफेक्ट बा कौन पेन ऑफ प्लेजर मध्ये दाउ कहंती लॉ ऑफ इफेक्ट को कौन प्राइमरी लॉज रे हमर तीनटा लॉज रहला लॉ ऑफ रेडीनेस और मोटिवेशन लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस लॉ ऑफ इफेक्ट। सेकेंडरी लॉ रे कौन ना लॉ ऑफ हमर लॉ ऑफ प्राइमेसी लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस लॉ ऑफ एटीट्यूड लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी एक्सेट्रा। सेकेंडरी लॉस रे से बहुत सारा देथिले किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट प्राइमरी लॉ रे से तीनटा लॉ देथिले। एठी पचरची कोन ना इफ ए लर्नर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स is forced to study the subject
then the learning is not fruitful. This is explained by which law of Thorndike? से कौन पचार जदि गोटे पिला मैथमेटिक्स रे कोन इंटरेस्टेड नुह ताको मैथमेटिक्स गणित कसिबा पे ताको भलो लागे नाही किंतु ताको आमे फोर्स करू छंती जबरदस्ती नाही तो एक्सरसाइज बा प्रैक्टिस करिया को पड़िबो से सब्जेक्ट को देन लर्निंग फ्रूटफुल हबो नाही तो सेटा थॉर्नडाइक को मुताबिक कोउल ना लॉ ऑफ रेडीनेस एठी पचारछि इंटरेस्ट इंटरेस्ट माने हमर कथा आसिला रेडीनेस ऊपर जदि पिलाटा निजे रेडी नाही मोटिवेटेड नाही ताको जेते चेष्टा कले भी आमे लर्निंग टा फ्रूटफुल हबो नाही एठी ताले करेक्ट ऑप्शन हमर कोन हे जबो लॉ ऑफ रेडीनेस रेडीनेस को अदरवाइज मोटिवेशन मध्ये कहंती लॉ ऑफ रेडीनेस बेसिकली चाइल्ड रो इंटरेस्ट को देखिकी थॉर्नडाइक करथिले एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 in tribal areas which is the function organized by Srujana to provide an opportunity to student to let go of fear and express themselves freely कौन हला ट्राइबल एरिया मानन करे जेते बेले कोनोसी फंक्शन ऑर्गेनाइज करा जाउछि ट्राइबल एरिया रे जेते बेले आमे कोन ना किछि फंक्शन ऑर्गेनाइज करूछंदी सेते बेले सृजन मानन द्वारा किछि एक्टिविटी करा जाई थाए जेउ एक्टिविटी रे आमे पिला मानन मधुरु कोन ना जो फियर रहिला एंजाइटी रहिला ताकू काढी दबा जहा द्वारा कि से फ्रीली इंडिपेंडेंटली निजर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करि परिबो सेटा को एक्टिविटी द्वारा स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल द्वारा स्टूडेंट मानन मधुरु फियर को काढिबा एक्सप्रेस करिवे से माने निजे फ्रीली निजो को जेते बेले हम सॉन्ग और डांस फेस्टिवल कथा आसीबो सेते बेले हमर क्वेश्चन जदी पडिथिबो जे पिला मानन को प्रेरणा दवा पई स्कूल को जिबा पई जेते बेले ट्राइबल एरियाज रे स्टूडेंट मानन को स्कूल को अभिमुखे करिबा पई को प्रकार एक्टिविटी बा फेस्टिवल करा जे सॉन्ग और डांस रो जेते बेले फियर को लेट गो करिबा एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली भय को दूरीभूत करके निजे निजु को से माने एक्सप्रेस करिवे फ्रीली सेते बेले आसीबो कोन स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल तो एठी करेक्ट ऑप्शन कोन आइबो स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल क्वेश्चन नंबर 9 रो in our state under multilingual education program multilingual means बहुभाषी बहुभाषी शिक्षा in our state under multilingual education program books have not been published in which following language आमर कोन ना मल्टीलिंगुअल एजुकेशन केउ भाषा रे एपर्यंत बुक पब्लिश होई नाही किसान हेची कोया हेची ओराम हेची किंतु भातुडी लैंग्वेज रे हमर कोन ना एपर्यंत कोनोसी बुक पब्लिश करा जाय नाही मल्टीलिंगुअल एजुकेशन रे loss of readiness of Thorndike is also known as law of readiness readiness कथा जतले आसीबो कोन ना हमर इंटरेस्ट कथा मोटिवेशन कथा निज भितरु जतबेले पिला बाहर हो बाह्य सोर्स रो हो किमा निज भितरे भी हो किंतु जदि पिलाटी रेडी ही नथिबो इंटरेस्टेड ही नथिबो मोटिवेटेड ही नथिबो सेतबेले कोन ना लर्निंग टा फ्रूटफुल हे परिबो नाही तो रेडीनेस law of readiness otherwise called as law of motivation option number A is the correct answer who is the creator of operant conditioning ro creator kiye operant conditioning most easy question operant conditioning BF Skinner ko sahita associated which of the following is not a rule for preparing completion type question तो हम type of test टिके देख दबा type of test कोन देखिबा type of
टेस्ट टाइप ऑफ टेस्ट टू टाइप समस्ते जंती जानते आमे गोटे होछि ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर जोटा को हमें कहंती आ गोटे होछि सब्जेक्टिव टाइप लॉन्ग आंसर जोटा को कहंती ऑब्जेक्टिव पुणी केते भाग रे विभक्त ना दी भाग रे कौन कौन हमर कौन सप्लाई टाइप आ गोटे होछि रिकॉग्निशन टाइप सप्लाई टाइप सेमती दी प्रकार रिकॉल टाइप दी प्रकार आ गोटे होछि कंप्लीशन टाइप रिकॉग्निशन कौन आमर तीन प्रकार ट्रू फॉल्स आइटम जो थे रहिबो एमसीक्यू जो थे रहिला नेक्स्ट कौन आमर ना मैचिंग द आइटम जो थे रहिला मैच द फॉलोइंग सब्जेक्टिव सेमती कौन ना दुई प्रकार सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम गोटे होछि हमर ओपन एंडेड जोटा को हमें कौन कहते ताको एक्सटेंडेड जो थे तुम जिते पारिबो सेते लिखि पारिबो एक्सटेंडेड लिमिट नाही किंतु नेक्स्ट सेकंड टाइप टा कौन सब्जेक्टिव रो क्लोज एंडेड जोटा रेस्ट्रिक्टेड जोटा आमर देइथिबो 50 शब्द रे लेख 20 शब्द रे लेख 2 मार्किया देइथिबो 2 लाइन रे लेख एगुडा सब कौन रेस्ट्रिक्टेड लिमिट दे देथिबो बुझेला तो एठी पचारची कौन ना कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन रे हमर कोन रहइबो ब्लैंक should not be kept in the beginning of a sentence or statement there can be multiple blanks in a single question not पचारची कोटा गोटे कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन रहइबो नाही a sentence having ambiguity preparing the completion type तो कोटा हमें देखिबा चूज करिवे जे कोटा गोटे रूल नुह a sentence having ambiguity in meaning should not be used एटा ठीक माने करेक्ट सेंटेंस not be used से कहिछि ना कोन ambiguity रहिबो नाही भूलभाल शब्द रहिबो नाही the length of blanks in the question must be nearly पाखरे रहिबो ठीक अछि there can be multiple blanks गोटे क्वेश्चन हमें दबा किंतु डैश गोटे सिंगल क्वेश्चन रे मल्टीपल ब्लैंक्स रहिले से क्वेश्चन रो अर्थ ही मीनिंग ही बुझा पड़िबनी तो पिला अटेंड केमदी करबो तो एटा कोन हे जबो ना करेक्ट हे जबो से नॉट पचरची तो एटा एम्बिगुइटी रहिबो नाही गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स बा रूल ब्लैंक्स पाखरे रहिबो ब्लैंक शुड नॉट बी केप्ट इन बिगिनिंग प्रथम रो ब्लैंक्स रहिबो नाही सेंटेंस बा स्टेटमेंट रो तो करेक्ट कोन हे जबो देयर कैन बी ए मल्टीपल ब्लैंक्स इन ए सिंगल क्वेश्चन नेक्स्ट देखिबा कोन क्वेश्चन नंबर 14 who gave importance to self realization as a medium for further research से कम बचलना ना कि इंपोर्टेंस देथिला सेल्फ रियलाइजेशन ऊपर कोन ना मीडियम ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऊपर अल्बर्ट देथिले रोगर देथिले दी जण देथिले किंतु रोगर कोन मेन फोकस करथिले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जोटा हम कहते सेल्फ रियलाइजेशन जोटा हम कहते सेल्फ रियलाइजेशन से कौन कही ना व्यक्ति कौन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कौन पाई करिवो ना गोटे बेस्ट वर्जन काढिबा पाई से निजको भलो करबा पाई कौन करिवो ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करिवो मु निज भितर कौन मोर त्रुटि रही गला ताको संशोधन करिया कथा के कहिथिले रोग सेति पई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बा रियलाइजेशन कथा के कहिथिले हमर रोगर कहिथिले इंपोर्टेंस प्रथम के देथिले रोगर एठी ऑप्शन नंबर बी हे जबो कोन करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which is not an element of influencing the personality of a child से पचरची not an element पचरची हेरिडिटी तो गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट
हमर इन्फ्लुएंस करिवो पर्सनालिटी को जोडा हम कहंती कोन वंशानुगुण एनवायरनमेंट परिवेश मध्य हेल्थ जदि तार स्वास्थ्य ही ठीक नथिबो भलो लागु नथिबो से निजुकु कोन ना डेवलप करि परिबो नाही क्लासरूम लर्न करि परिबो नाही कोनो से जिंस रे ता मन लागिबो नाही हेल्थ बी मोस्ट इंपोर्टेंट स्कूल इन्फ्लुएंस करिबोनी काहेकि करिबो किंतु किछिटा मात्रा रे ए जो तीनटा ऑप्शन देछि हमर हेरिडिटी एनवायरनमेंट हेल्थ ताठो टिके कम तो एठी मोस्ट अप्रोप्रिएट टा हमें देखिबा तो कौन हम स्कूल ऑप्शन नंबर डी हो कौन करेक्ट 15 नंबर क्वेश्चन पाई नेक्स्ट देखिबा कौन क्वेश्चन नंबर 16 which of the following is not an educational constructivism implication of से पचार not an educational constructivism ऊपर प्रीवियस सेशन हो कि आजर भी सेशन में constructivism कथा क्लियरली एक्सप्लेन करा जायछि तो constructivism कौन कहले से नॉट एंड पचार एजुकेशनल इम्प्लिकेशन आम देखा कौन ना क्रिएटिंग स्कोप फॉर सेल्फ एनालाइज कंस्ट्रक्टिविज्म रे से सेल्फ एनालाइज कले ही किछि क्रिएट करिवो बा किछि निज जिंस तयारी करिवो तो एटा ठीक हे जिवो से पचार नॉट इंस्पायर चाइल्ड टू फ्रेम क्वेश्चन निजे ही कंस्ट्रक्टिविज्म रे सेंटर ऑफ द एक्टिविटी की ना चाइल्ड तो से निजे ही फ्रेम करिवो लर्निंग टू बी कंट्रोल बाय टीचर माने कंट्रोल करिवे एटा टिके देखिबा गिविंग इंपोर्टेंस टू रियलिस्टिक अप्रोच फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कथा आसिला माने एटा तार कोन हे जिवो एजुकेशनल इम्प्लिकेशन हे जिवो तो कोन हबोनी लर्निंग ता टीचर को द्वारा कंट्रोल हे परिबो नाही तो ऑप्शन नंबर सी एठी करेक्ट हे जिवो कंस्ट्रक्टिविज्म रे कोन टीचर को रोल बा भूमिका किछि रहिबो ही नाही से केवल गोटे फैसिलिटेटर भाबरे काम करिवे नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द नेम ऑफ कमिटी established in 1958-59 pertaining to women education से पचारछि को कमिटीटा हमर वुमेन एजुकेशन ऊपर फोकस करथिले जोटा कि 1958-59 रे गठन हेतिला कोठारी कमिशन दे देख दबा कोठारी कमिशन हमर 1964-66 रे हेतिला जोटा कि हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन मध्य कहंती फोकस करथिला काहा ऊपर ना एजुकेशन सिस्टम रा प्रेजेंटली कौन एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम बा इश्यू ऊपर के फोकस करथिला कोठारी कमिशन तो एजुकेशन सिस्टम ऊपर से करथिला नेक्स्ट कौन मुदालियर कमिटी के हेतिला 1950-53 बेले तो सी कौन कला मुदालियर कमिटी को हम अदरवाइज कहंती कौन सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन जे कि फोकस कला सेकेंडरी एजुकेशन में कौन प्रॉब्लम इंप्रूवमेंट हे परिबो नेक्स्ट कौन आसिला राधाकृष्ण कमिटी को हमें कौन कहंती ना राधाकृष्ण कमिटी कौन कला ना यूनिवर्सिटी रो जतिको प्रॉब्लम सब रहिला से कौन ताको कैटर कला यूनिवर्सिटी एजुकेशन रे कौन प्रॉब्लम अछि इंप्रूवमेंट हे परिबो ताको कौन राधाकृष्ण कमिशन कहितला केबे हितला एटा 1948 रे नेक्स्ट देखिबा कौन ना हमर दुर्गाबाई देशमुख एटा हितला 1958-59 रे जोडा कि दुर्गाबाई देशमुख थिले चेयरमैन से कौन करथिले ना फोकस करिया पई कहितले कहा ऊपर ना एजुकेशन ऊपर फोकस करिया पई कहितले एजुकेशन वुमेन एजुकेशन ऊपर किए फोकस करिया कहितला ना दुर्गाबाई देशमुख सेठी करेक्ट ऑप्शन कोन हे जिवो दुर्गाबाई देशमुख 1958-59 रे कौन कला ना हमर वुमेन एजुकेशन ऊपर फोकस करिया पई कहितला क्वेश्चन नंबर 18 which of the following is the provision under person with disability act 1995 person with disability act PWD person with disability act PWD act 1995 सी कौन कहितला पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट बा पीडब्ल्यूडी एक्ट कौन गला ना इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर जेंडर बा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कौन करिवो जो मानकर डिजेबिलिटी रहिछि से मानकर राइट्स को कौन ना प्रोटेक्ट करिवो पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट मान को इक्वल एक्सेस इक्वल एजुकेशन इक्वल
राइट्स प्रोवाइड करा जिवो तांको राइट्स मानकर प्रोटेक्शन मध्य दिया जिवो तो कौन एठी देइची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कोटा प्रोविजन पचारची तो देखिबा फ्री एजुकेशन टिल 14 इयर्स ऑफ एज प्रोविजन ऑफ ओनली वन लैंग्वेज इन करिकुलम फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट टिल 14 वर्ष पर्यंत केवल शिक्षा देबा ना तांको गोटे लैंग्वेज रे केउ पिला मानक दबा हियरिंग इम्पेयर्ड पिला मानक पई गोटे लैंग्वेज रखिबा प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस देबा रेगुलर अटेंडेंस जो माने दउथबे ना नॉन ऑफ दिस तो रेगुलर जो माने अटेंडेंस देले से मानु केवल सहाय्य करबा आ काहा को सेटा ठीक से कहिनी प्रोविजन नुह तार कोन थिला ना प्रोविजन ऑफ ओनली वन लैंग्वेज इन द करिकुलम फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो मानकर श्रवण जनित असुविधा रहउची जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन मानकर बा हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट मानु कोन गोटे लैंग्वेज दिया जिवो बा गोटे तांको पई लैंग्वेज रहिबो जे हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन माने से लैंग्वेज रे ही पाठ पढ़िबे तो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 या पर फोकस करथिले बा प्रोविजन तारे सेटा थिला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 according to which article of RTE 2009 any form of physical or mental punishment can be administered to a child सी कौन देची RTE 2009 RTE 2009 Act 17 रे कौन कहिला ना no child shall be subjected to have physical torture বা physical punishment and mental harassment से कौन कहिला irrespective of any regardless any religion caste color gender socio-economic status no child shall be subjected to have physical punishment and mental harassment को एक्ट रे एक्ट 17 रे की कहला आरटी एक्ट 2009 तो देखिबा आर्टिकल 17(1) क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट देखिबा कोन क्वेश्चन नंबर 20 in which system regular teachers and resourceful teachers take responsibility for education of differently abled student से कौन पचारची ना केउ सिस्टम रे हमें रेगुलर स्किलफुल टीचर को कोन रेस्पोंसिबिलिटी दबा डिफरेंटली एबल स्टूडेंट मान को कैटर करबा पई से कौन कहिला ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन रे जो माने रेगुलर टीचर माने कॉमन एनवायरनमेंट रे पढेबे बोथ डिफरेंटली एबल और नॉर्मल स्टूडेंट मान को से कौन कहिला ना से रिसोर्सफुल हेतिबा दरकार तांकर सेति की बोध शक्ति थिबा दरकार रेस्पोंसिबिलिटी सामर्थ्य थिबा दरकार जे से कौन करेबे ना डिफरेंटली एबल स्टूडेंट मानन को रेगुलर कोन रेगुलर पिलांग सहित इंटीग्रेट करी पढे परियो तो एटा कोन हेगला ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट हे जिवो इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम रे रेगुलर टीचर रिसोर्सफुल टीचर टेक रेस्पोंसिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ differently able student next देखिबा क्वेश्चन नंबर 21 student suffering from cerebral palsy requires which teaching method cerebral palsy means मस्तिष्क पक्षाघात मस्तिष्क पक्षाघात मस्तिष्क पक्षाघात कौन जो मानकर मेंटली प्रोब्लेम रहिबो मेंटली एबल्ड स्टूडेंट जो मानकर मेंटली किछि डिसेबिलिटी रहउची से मानु कोन हम अभिनय करि देले से बुझिबे बुझिबे नाही प्रोजेक्ट देले से माने कोन करिवे करिवेनी तांको जदि हम ओराली किछि पाठ रे तो एटा कर एटा सेटा कर से कोन बुझिबो किछि करिवनी सेतिबे कोन तांको सहित खेली खेली एक्टिविटी बा प्ले वे मेथड रे खेलकूद माध्यम रे तांको कोन करबा ना लर्न करै परिबा टीचिंग मेथड यूज करै परिबा नेक्स्ट देखियो कोन ना क्वेश्चन नंबर 22 कोन देछि मोटिवेशन इज सेंट्रल फैक्टर इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग some time of motivation must be present in all learning who said this से पचले कोन
ना मोटिवेशन होची सेंट्रल फैक्टर गोटे इफेक्टिव मैनेजमेंट रे गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे मोटिवेशन होची मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जदि मोटिवेशन रहिबो नाही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फ्रूटफुल हेबो नाही ए स्टेटमेंट ता कहारा ना केली देथिले के देथिले केली कहितले मोटिवेशन होची मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो दरे कि शिशु निज टीचिंग लर्निंग जहाँ भी तार टीचर दबो ताकू भलो भाबरे ग्रहण करिवो अडॉप्ट करिवो एवं टीचिंग ता इफेक्टिव हे परिवो। नेक्स्ट देखिबा कोन क्वेश्चन नंबर 23 अकॉर्डिंग टू UNCRC कोन ना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन on the rights of child UNCRC रो फुल फॉर्म कौन है ना यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड से कौन कहला ना एटा गोटे कंपलसरी एलिमेंटरी एजुकेशन कम्स अंडर व्हिच राइट ऑफ ए चाइल्ड राइट ऑफ डेवलपमेंट गोटे छात्र व शिक्षार्थी रो डेवलपमेंट संपूर्ण विकास पई ता पाखरे अधिकार रहबा दरकार कोई अधिकार ना राइट ऑफ डेवलपमेंट किए दब कौन पई ना ता पाखरे राइट ऑफ ए चाइल्ड इंक्लूड हबो कोथरे राइट ऑफ डेवलपमेंट रे राइट ऑफ चाइल्ड कोथरे इंक्लूड हबो राइट ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिबा एठी क्वेश्चन तले बुझि पाइला 23 रो आंसर हबो बी। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट विषय रे हम प्रीवियस क्लास रे बहुत सारा डिस्कस करचंती डिफरेंशिएट करचंती ग्रोथ और डेवलपमेंट को जदि जो माने देखि नांती जल्दी जाई कि सेठी विजिट करंतु आ ग्रोथ और डेवलपमेंट कोन डिफरेंशिएट हेतला देखि परिबे। तो ता भितर को हम न जानि कि न जाई कि एठी कोन डिस्कस करबा डेवलपमेंट रे निम्नोक्त मध्यरु केउ स्टेटमेंट टी अंतर्भुक्त नुहे नॉट पचरती डेवलपमेंट प्रोसीड मोर रैपिडली इन years of life, right? Development occurs at different rates for different parts of the body, correct? Development is caused by heredity alone. Development follows an orderly sequence ना yearly years of life रे कोन डेवलपमेंट अधिक हुए वृद्धावस्था रे टिके तार स्लो हे जाय प्रोसेस डेवलपमेंट caused by heredity only तो एटा कोन हे नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट हे जिवो डेवलपमेंट ऑकर डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ठीक अछि डेवलपमेंट फॉलोस एन ऑर्डरली सीक्वेंस डेवलपमेंट कोन ना गोटे सीक्वेंस फॉलो करे गोटे सीक्वेंस रे गोटे मनुष्यर डेवलपमेंट हे थाए सीक्वेंस तो एटा करेक्ट से बजारची नॉट ट्रू कोन ना डेवलपमेंट केवल हेरिडिटी नुआ डेवलपमेंट काहा द्वारा हुए ना डेवलपमेंट पाई दुईटी जिंस दरकार दुईटी फैक्टर कौन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ कौन ना रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिवा which of the following is not a law of heredity which heredity as propounded by Mandel कौन कहिले ना Mandel देथिले कौन Mandel देथिले law of heredity से कौन ना लॉ ऑफ हेरिडिटी रे केतडा लॉ देथिले बा फैक्टर देथिले से गुडे कौन लॉ ऑफ वेरिएशन रिग्रेशन लाइक बजेट लाइक माने कौन लॉ ऑफ वेरिएशन विभिन्नता रहिबो
मैंडल देथिले लॉ ऑफ वेरिएशन देन कौन लाइक इट्स लाइक आ गोटे कौन देथिले हमर लॉ ऑफ रिग्रेशन कौन ना विभिन्नता रहिबो इंडिविजुअल डिफरेंस रहिबो लॉ ऑफ रिग्रेशन प्रत्याकलन रहिबो लाइक बेजेट लाइक मीन्स समानता रहिबो लाइक बेजेट लाइक मीन्स समानता रहिबो किंतु लॉ ऑफ अनयूजुअलनेस असमानता अनयूजुअलनेस मीन्स असमानता मैंडल को दिया जाइथिबा लॉ ऑफ हेरिडिटी रे अंतर्भुक्त नुहे तो एठी करेक्ट पचारछि कोन नॉट लॉ ऑफ हेरिडिटी डी हे जिवो करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखिबा ए गुड टीचर इज टू प्रोवाइड नॉलेज एंड प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन गोटे भलो शिक्षक कौन करिवो देखिबा प्रोवाइड नॉलेज एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन पय ताको प्रिपेयर करेबो prepare the student for right answer to be written in the examination केवल examination रे लेखिया पय ताको prepare करिवो ताको provide करिवो authentic learning facilitate करिवो तांकर independent thinking को among student follow the timetable course strictly तो कौन हे जो हमर करेक्ट गुड टीचर सब बेले कौन ना ओरिजिनल लर्निंग सोर्स प्रोवाइड करिवो पिला मानकर इंडिपेंडेंट थिंकिंग को एनहांस करियार अपॉर्चुनिटी दबो आ तुमको फैसिलिटेट करिवो एक्टिवली एंगेज करिया पई तो एटी करेक्ट कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट नेक्स्ट देखिबा which of the following is related to the principle under NCF 2005 NCF 2005 under रे को प्रिंसिपल ता हमरा रिलेटेड student acquire knowledge in their own way rote learning result no longer retention student unable to learn better by asking question problem solving approach help in acquiring knowledge so NCF 2005 our modern education system mainly activity problem solving upare approach upare kono फोकस कला तो एठी कोन मोस्ट एप्रोप्रिएट होची प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हेल्प्स इन एक्वायर नॉलेज एनसीएफ 2005 प्रमोट कला टीचर आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट इन ए ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज बिसाइड लर्निंग दे हेल्प इन टीचर कोन टीचर आर एडवाइस टीचर माने पिला मानु को एडवाइस करिवे कोन ना ग्रुप एक्टिविटी दलगत भाबे कार्य करिवे पई जहाँ द्वारा कि सेमानंगर कौन डेवलप होबो सोशलाइजेशन डेवलप होबो सामाजिकीकरण सामाजिकीकरण बा सोशलाइजेशन रिफर्स टू सोशल इंटरैक्शन से माने निज निज भितर जेतेबेले इंटरैक्ट करिकी शेयर करिकी आइडियाज लर्निंग नॉलेज से माने कोन बेटर वे रे निज को एनहांस करिवे बा लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करिवे सेटा आंसर हे जो कोन सोशलाइजेशन एडवाइस करिवे टीचर ग्रुप एक्टिविटी एथि पई करिया पई से मानक मध्ये रे सोशलाइजेशन डेवलप करबे ना कि एग्रेशन जेलसी कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 29 knowing the ability of children to study a new English language textbook comes under which type of evaluation knowing ability आमे प्रीवियस क्लास रे मध्ये पढी छंदी फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक एठी आसला गोटे नुवा प्लेसमेंट ना कोन आमे जान छंदी फॉर्मेटिव at during teaching process बा क्लासरूम रो ड्यूरिंग रे जो असेसमेंट कले समेटिव कोन at the end of teaching learning process diagnostic is
कौन मेजर करबो हमर कौन असेस करबो असेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस प्लेसमेंट कौन ना जेते गोटे पिलार प्लेसमेंट कौन ना बिफोर प्लेसमेंट गोटे शिक्षार्थी को उचित स्थान बा तार उचित दक्षता को देखिए जिते आम किसी जिनस मेजर उचित दक्षता को देखा जो आसेस करती गोटे पर्टिकुलर फील्ड से कौन ना प्लेसमेंट असेसमेंट हुए तो प्लेसमेंट असेसमेंट बेसिकली चाइल्ड रो कौन एबिलिटी को आसेस करे एबिलिटी देखिकी ताको प्लेसमेंट दिया जाए तो एठी हो कौन एबिलिटी ऑफ ए चिल्ड्रेन तो एठी 29 रो ऑप्शन नंबर ए हेजबो करेक्ट ऑप्शन Which of the following is not a characteristics of learning activity? Learning activity रो को निम्नतम मधुर केउटी गोटे characteristics नुहे not वाला क्वेश्चन बेसी आछे तो क्वेश्चन को हमें फोकस करिया कोन बचाची not a characteristics तो लर्निंग जदि जॉयफुल हबो तो टीचिंग लर्निंग टा फ्रूटफुल हबो कि नहीं हबो तापर कोन डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर टीचर जदि सेठी डेमोन्स्ट्रेट कला लर्निंग एक्टिविटी कथा देछि तो लर्निंग एक्टिविटी रे मेन फोकस हमर के चाइल्ड कोन ना सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन द लर्निंग एक्टिविटी मेथड लर्निंग एक्टिविटी रे कोन और डेमोन्स्ट्रेट टीचर कोन बाय करिवो चैलेंजिंग रहिले तो पिला भीतर क्यूरियोसिटी रहइबो इंटरेस्ट रहइबो करिबा पई नेक्स्ट होचे अपॉर्चुनिटी फॉर मल्टी स्किल डेवलपमेंट तारा थिंकिंग डेवलप हैला तार रिलेटेड टू मोटर ग्रॉस रिलेटेड डेवलपमेंट हैला से जदी खेल रे बा स्पोर्ट्स रे एक्टिविटी करूची तो तार फिजिकल डेवलपमेंट जदी हम किछि क्विज फुइज दउचंदी मेंटल डेवलपमेंट जदी किछि हमें ताकू ओराली पचारचंदी बा रिटन किछि हमें दउचंदी करिया पई तो तार से जिंस मध्ये डेवलप हैला तो मल्टीपल स्किल्स डेवलपमेंट होबार चांस अछि लर्निंग एक्टिविटी रे किंतु डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर्स एडा कोन not a characteristics of learning activity because learning activity basically refers to the child center of the position के रहला child तो child रो भूमिका एठी अधिक ना कि टीचर केवल एठी फैसिलिटेटर तो कोन ना आज हम डिस्कस करले केतरा क्वेश्चन टोटल 30 टा क्वेश्चन हम कवर करले नेक्स्ट क्लास रे हम प्रीवियस ईयर आउ किछटा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन डिस्कस करबा आज भाई एतिक नमस्कार।